नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम सा में, जिसका इंतजार आप हर सप्ताह करते हैं। हमारे किसान भाई हर सप्ताह इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। जी हाँ, एक ऐसा खास शो जो कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए बना है। जी हाँ, हम आज आपको लेकर आए हैं इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2024 में। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें किसान अपनी पसंद के ट्रैक्टर को चुनते हैं, अपनी अलग अलग तरीके की अलग अलग कैटेगरीज में ट्रैक्टर्स को चुनते हैं, इम्प्लीमेंट्स को चुनते हैं और फाइनेंसर्स को चुनते हैं, बताते हैं कि उनकी दृष्टि में कौन सा ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, कौन सा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा है और कौन सा फाइनेंसर बहुत अच्छा है। जी हाँ, इस बार इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ये 5वां एडिशन है और आज हम आपको लेकर चलेंगे सीधे उस शो में और बताएंगे कि कौन से ट्रैक्टर को किसानों ने चुना है अपना सबसे बेस्ट ट्रैक्टर। तो आइए दीप प्रज्वलन करते हैं और चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। आज के इस इवेंट में मेरे साथ मेरे को होस्ट जुड़ेंगे जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है जब मैं बात करती हूँ ट्रैक्टर इंडस्ट्री की। सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, ज्ञानी जिसे कहते हैं, ये वो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील सुशीला शर्मा, एक्सपर्ट ऑफ ट्रैक्टर इंडस्ट्री एंड रेसिडेंट एडिटर इन मेनी मेन स्ट्रीम चैनल। काफ़ी सालों से इनका एक प्रयास है कि देश में जो किसान हैं उनका विकास हो सके और कृषि का एक जो क्षेत्र है उसमें ये हमेशा अग्रसर रहते हैं उसके कार्यों के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर मिस्टर सुनील जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। एक बार फिर वही खूबसूरत शाम, एक बार फिर वही खूबसूरत मौका, एक बार फिर वही खूबसूरत महफिल और बाहर बहुत खूबसूरत मौसम। जी हाँ, 1892 में 130 साल पहले जब पहला ट्रैक्टर बनाया गया होगा, तब 7 समंदर पार बनाने वाले ने कभी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान के अलवर जिले में रहने वाले रजत गुप्ता इस ट्रैक्टर को एक इतने बड़े शो के रूप में प्रेजेंट करेंगे जो कि हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा ट्रैक्टर अवार्ड शो कहलाएगा। एक बार जोरदार तालियां रजत गुप्ता जी के लिए। जब आप लोगों से मिलता हूं, आप लोगों से हाथ मिलाता हूं, तो मुझे लगता है मेरे देश के करोड़ों किसानों से मैंने हाथ मिला लिया। जब आप लोगों से मिलने का मौका लगता है तो मुझे लगता है कि आप उस व्यवसाय में हैं जिस व्यवसाय से मेरे देश के खेतों की सौंधी माटी की महक आती है। आप सभी लोगों का जोरदार स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया इस एग्रीकल्चर को। जी हाँ, एग्रीकल्चर को मैं दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर कहता हूँ और आप सब लोग उससे संबंध रखते हैं। आप सब लोगों का संबंध उससे है, जी हाँ, उससे जो कि हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर आता है। जी हाँ, आप सब लोग एग्रीकल्चर से हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और स्वागत है आप सभी का ITOT 5th एडिशन में, जिसे हम आज एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आज के इस इवेंट की मैं शुरुआत करना चाहूंगी एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम डॉक्टर CR मेहता, डायरेक्टर ICAR, Central Institute of Agriculture Engineering and ITOT Awards 24 jury chairman, to please come here for the keynote address. In the end, on behalf of jury members, I congratulate all the award winners. It will be announced shortly. Everyone is looking forward to that. And I also thank the Tractor Junction, particularly for organizing this award ceremony for the 5th time. And under the leadership of Mr. Rajat Gupta to organize this event. And I wish all the best to Tractor Junction to grow at a very fast pace the way it is growing during last few years. Thank you all. Thank you so much, sir. So as CR Mehta sir rightly pointed out the challenges and opportunities of the agriculture sector and where farmer needs the smart machinery. So it requires the proper implementation and farmers mechanization, as sir said. But right, we are actually excelling the growth. प्रारंभ करते हैं हमारा ये 5वां एडिशन इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर का। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम शुरू करते हैं। पहले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। रिमझिम, क्या है पहली कैटेगरी? So पहली जो हमारी कैटेगरी है, the category is tractor
HP, and that is horsepower award category. And the first category is Best Tractor Under 20 Horsepower. So this horsepower category represent those farmers who are making the switch from bullock carts to tractors. It's a very popular segment in Gujarat and some parts of Uttar Pradesh. So let's just get this started. And to present the award, Welcome to the CEAT Specialty Presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our first award category is Best Tractor Under 20 HP, and the nominees are Mahindra Yuvraj 215, Sonalika MM18, The award goes to Captain 200 DILS. well, now the next category is the best tractor between 21 to 30 horsepower. This horsepower category represents the compact tractor category where tractors are mostly used for interculture operations and crop protection operations in orchards and vineyards. So can we have the nominations? The nominees are presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Tractor Under 21 to 30 HP, and the nominees are Mahindra Oja 2130, Sonalika Tiger 26, देखते हैं कौन रहे इस कैटेगरी के विजेता. There are two winners in this category. First one is Kubota Neo Star B2441, and the second winner is VST Shakti MT270. So first we request can we have the nomination, and the nominees are CEAT Specialty presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Tractor Under 31 to 40 HP, and the nominees are Mahindra 275 DI XP Plus, New Holland 3032 TX Smart, The first winner is Eicher Prima G3 333 Super Plus. winners. Now the next winner is Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Tractor Under 41 to 45 HP, and the nominees are Mahindra 475 DI XP Plus, New Holland XL 4510. The winner is Mahindra 475 DI XP Plus. the next category is best tractor between 46 to 50 horsepower. The upper end of the 41 to 50 HP segment, these customers are looking for multi-use operations, better features, and improved economy. And of course, style also matters. And the nominations are CEAT Specialty presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Tractor Under 46 to 50 HP, and the nominees are Mahindra Yuvo Tech Plus 575, And the award goes to New Holland 3630 TX Super Plus. And to give the award, I request Mr. Vinkesh Gulati sir, FADA, with jury member Jaswant Chaudhary sir to please be here on the stage. CEAT Specialty presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Tractor Under 51 to 60 HP, and the nominees are Mahindra Novo 605, Sonalika Tiger 60 CRDS 4-wheel drive,
इस अवार्ड के विजेता है फार्मटेक 6055 पावर मैक्स। And the last segment of this category, and the category is Best Tractor above 60 horsepower, यानी कि horsepower का बादशाह। Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Tractor Above 60 HP. And the nominees are Mahindra Novo 755, New Holland 5620 TX Tram 4. So the winner is Sonalika Tiger 65 CRDS 4WD. Well, now moving on, we have been joined by Mr. Jay Doshi from Seat Specialty. I request him to please be here on the stage to share his words of wisdom. Thank you. Seat started in 1924 in a small town of Turin in Italy and has continued the legacy through years and has come at this juncture where it has positioned itself as one of the leaders in tire industry. I'll conclude with this and leave you all with a short AV to commemorate this short journey of Seat. Thank you. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause? Seat, ताकत की नई पहचान, and we are celebrating 100 years of Seat. Thank you so much, Jay sir, for sharing the insights on the latest trends and the advancement in specialty tires for tractors and farm equipments. Well, now this category is Straw Reaper of the Year, and let's see the nominations. The nominations are Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Straw Reaper of the Year. And the nominees are Sonalika Straw Reaper, Dashmesh 517 DLX Tractor Operated Straw Reaper, Garud Straw Reaper, Jagatjeet Straw Reaper. Let's find out the winner. The Straw Reaper of the Year award goes to Jagatjeet Straw Reaper. the most popular implement for primary land tillage in the black cotton soil states of Maharashtra, Madhya Pradesh, and Karnataka. This implement is synonymous with the growth of the tractor industry in these states. Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Reversible Plow of the Year. And the nominees are Sonalika Jumbo Hydraulic Reversible MB Plow. And the first winner is Field King, and the second winner is Lemkin. Next one is Lemkin. Implement manufacturer who has made an impact on the Indian farmers through its digital physical launch of implement during the year 2023 to 2024. And the nominees are Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Implement Launch of the Year. And the nominees are Mascio Gaspardo Rewind Reverse Forward Rotavator, Lemkin Sugarcane Thresh Cutter Spinal 160, Mitra Aerotech Turbo 200 liter and Aerotech Turbo 400 liter. Let's declare the winner. Implement Launch of the Year. Implement Launch of the Year award goes to Mascio Gaspardo Reverse Forward Rotavator.
Can we have them here on the stage, please? Mr. Shyama sir and Anshu sir from Green TV. Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Smart Farm Machinery of the Year. And the nominees are Mahindra Tez E Rotavator, Case IH Ostov 4010 Max, Sonalika Pneumatic Planter, Massey Ferguson Dynasmart Series, सबसे बड़ा स्मार्ट ऑलराउंडर स्वराज 8200, India's first intelligent harvester, Maschio Gaspardo Pneumatic SP Planter. And the first winner is Shaktiman Sugar Cranes Harvester 3737 Tejas Ultra. Next winner is Dashmesh Super Seeder 711. Represents the equipment which has created an impact amongst farmers in the field of technology. And the nominations are Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Post-Harvest Solution of the Year. And the nominees are Mahindra P990 Multi-Crop Thresher, Sonalika Inline Square Baler, Massey Ferguson 1840 Inline Square Baler, Swaraj 8200, India's first intelligent harvester. And the winner is Shaktiman Silage Baler 400 kg bale capacity. शक्तिमान category is Rotavator of the Year. The Rotavator represents one of the most widely used equipment all over the country with tractors. They do both land preparation in the soft and medium soil areas as well as intercultivation in the black cotton soil areas. And to give the prize, I request Mrs. Mamta Jain from Krishi Darshan with jury member PK Verma ji to please join us here on the stage. बस जोरदार तालियों के साथ अभिवादन सत्कार. Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Rotavator of the Year. And the nominees are Mahindra Mahaveta, Sonalika Premium and Challenger Series, AgriStar Powervator Tri Series. The winner is Maschio Gaspardo Virat Rotavator. So the next category is Self-Propelled Machinery of the Year. Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Self-Propelled Machinery of the Year. And the nominees are New Holland TC 5.30 C4 AC Cabin, Sonalika Self-Harvester Combine, Swaraj 8200, India's first intelligent harvester, Field King Multi-Crop Combine Harvester. And the award goes to New Holland TC 530 C4. Well, now, ladies and gentlemen, as we hop into the next category, the category is Implement of the Year. Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Implement of the Year. And the nominees are Mahindra Rotavator, New Holland Small Square Baler BC 5060
HD Plus, Sonalika Mobile Shredder, AgriStar Powerwater Dry Series, Swaraj Duravator VLX, Meschio Gaspardo Entry Round Baler. And the winner is Mitra Aerotech Turbo 600 liters. So the second winner is Sonalika Mobile Shredder. So the next category and the last category for this Farm Machinery Awards. Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Implement Manufacturer of the Year, and the nominees are New Holland Agriculture, Sonalika Industries, Meschio Gaspardo India, Field King, Dashmesh Group, Malerkotla, Punjab. So the Implement Manufacturer of the Year goes to Tirz Agro Technologies Private Limited. Tractor Junctions, we have been joined by Mr. Animesh Agarwal, co-founder and COO Tractor Junction. I request him to please be here on the stage. पिछले साल अक्टूबर 2023 में हमने फिंज की शुरुआत करी। फिंज क्या है, क्यों है, आगे बढ़ने से पहले उसका एक छोटा सा ऑडियो विजुअल क्लिप हम देखेंगे। जंक्शन परिवार की सबसे नई और उभरती हुई शाखा है फिंज। फिंज भारत में किसानों, ब्रोकर्स और डीलर्स की यूज्ड व्हीकल्स लोन प्रदान करने में मदद करता है। अक्टूबर 2023 में राजस्थान से फिंज का सफर शुरू हुआ और 2024 में हर महीने एक नए राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में इसका नेटवर्क पहुंच चुका है। अक्टूबर 2024 तक बिहार, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में भी फिंज अपनी सेवाएं प्रदान करने लगेगा। Thank you so much, Animesh sir, for laying down the vision and mission of Tractor Junction. Lal sir from Tractor Junction to please be here on the stage. Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Digital Transformation in Tractor Finance, and the nominees are TVS Credit Services Limited, Mahindra and Mahindra Financial Services Limited, RBL Bank Limited, Kogta Financial India Limited, Chola Finance, ICICI Bank Limited. Let's see who leads the category. Chola Finance. अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो दैट इज बेस्ट ट्रैक्टर फाइनेंसर्स एंड द नॉमिनीज आर Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Tractor Finance Institution, and the nominees are TVS Credit Services Limited, Mahindra and Mahindra Financial Services Limited. Award goes to HDB Financial Services Limited. Hello, ladies and gentlemen. The next category is fastest growing tractor financers. Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Fastest Growing Tractor Institution, and the nominees are TVS Credit Services Limited. So the award goes to IFCO Kisan Finance Limited. The next category is Innovative Tractor Financing Solution of the Year, and the nominees are Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Innovative Tractor Financing Solution of the Year, and the nominees are TVS Credit Services Limited, Mahindra and Mahindra Financial Services Limited, RBL Bank Limited,
Kokta Financial India Limited, IFCO Kisan Finance Limited, ICICI Bank Limited. Let's see who is the winner for this category. जहां से तालियां सबसे ज्यादा आ रही थी उन्हीं के लिए है आरबीएल बैंक लिमिटेड। Till the time they are joining, let's see the nominees for the most sustainable tractor financer, and the nominees are CEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Most Sustainable Tractor Finance Institution, and the nominees are TVS Credit Services Limited, Mahindra and Mahindra Financial Services Limited, IFCO Kisan Finance Limited. It's L&T Finance. The first winner is L&T. Next winner is HDFC Bank. Let's see जनता का विश्वास सबसे ज्यादा किस पे है, and the nominees are CEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Most Trusted Tractor Finance Institution, and the nominees are TVS Credit Services Limited. for the most trusted financial institution goes to Mahindra and Mahindra Financial Services. And till the time, can we have the nominees? And the nominees are CEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Farm Equipment Finance Institution, and the nominees are TVS Credit Services Limited, Mahindra and Mahindra Financial Services Limited, IFCO Kisan Finance Limited, HDFC Bank, Chola Finance, ICICI Bank Limited. Let's see who leads the category. Yes, it is TVS Credit. and let's see the nominees. And the nominees are CEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Pre-Owned Tractor Finance Institution, and the nominees are TVS Credit Services Limited, Mahindra and Mahindra Financial Services Limited, Kokta Finance. SK Finance. SK Finance. Can we have the nominations? CEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best CSR Initiative for Farmers, and the nominees are SDC Mahindra. And first I invite S free of cost ambulance service and pathology service. ACES. Next is J Farm from Tefe. Next is Monsieur Gaspardo India Limited for feed stock arrangement for Goshala. For distributing the weather station to needy farmers. मित्रा एग्रो, जी हाँ।
goes to New Holland for Unnat Kaushal and Medical Ambulance. It goes to Swaraj for Project Pani and Cancer Care in Punjab. Next to Mahindra for SDC. Next award winner is Sonalika for Patang Remedial Education Program. And the last winner in this category is Tirth Agro for Tera Tujhko Arpan. Thereby providing tractor movement in extremely muddy and slushy conditions, and not only for use in puddling. Well, now the nominees are SEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Four-Wheel Drive Tractor of the Year, and the nominees are Mahindra Yugo Tech Plus 585 DI 4-Wheel Drive, New Holland XL 4710 4-Wheel Drive, Sonalika RX 47 Sikandar DLX Multi-Speed 4-Wheel Drive, Massey Ferguson 254 Dynatrac 4-Wheel Drive. Best four-wheel drive tractor. The award goes to Kubota MU 5502. And let's see the nominees. The nominees for the best design tractors are SEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Design Tractor, and the nominees are Mahindra Oja, New Holland XL Ultima 5510, Sonalika Tiger 65 CRDS 4-Wheel Drive. And award goes to Mahindra Oja. And let's see the nominees. The nominees are SEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Tractor Launch of the Year, and the nominees are Mahindra Oja, New Holland 3032 TX Smart, Sonalika Tiger Series 4275 HP category Tiger 55 3rd. We go with the audience session, and award goes to Mahindra Oja. And can we have the nominees, please? The nominees are SEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Tractor for Commercial Application, and the nominees are Mahindra Arjun 555, New Holland 3032 TX Smart, Sonalika DI 734 PP, Massey Ferguson 8055 MagnaTrack 2-Wheel Drive, PowerTrack 439 Plus. Well, the winner is Massey Ferguson 8055 MagnaTrack 2-Wheel Drive. So can we have the nominees? And the nominees are SEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Best Tractor for Agriculture, and the nominees are Mahindra 575 DI XP Plus, New Holland 3630 TX Super Plus, Sonalika DI 60 DLX TP, Massey Ferguson
241 Sona two-wheel drive. The award goes to Farm Track 50 Power Max. So can we have the nominees? And the nominees are Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Orchard Tractor of the Year, and the nominees are Mahindra 265 DI XP Plus Orchard, Sonalika Bagban 32, Massey Ferguson 6028 Max Pro 4-wheel drive. The award goes to Massey Ferguson 6028 Max Pro. and can we have the nominees please for the tractor manufacturer of the year? Seat Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Our next award category is Tractor Manufacturer of the Year, and the nominees are Mahindra Tractors, New Holland Agriculture, Tractor Manufacturer of the Year award goes to International Tractors Limited, ITL. For the best tractor exporter of the year, I wanna just know. ITL, okay? The award is Captain Tractors. Winner for the Lifetime Achievement Award. एक ऐसा अवार्ड जो कि आपने अपने इंडस्ट्री को क्या दिया, आपने अपने जीवन में कितना काम उसमें किया, और उसका अवार्ड अभी उनका नाम अभी घोषित होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इस अवार्ड के लिए, इस कैटेगरी के लिए। और अब इंतजार कीजिए नाम का। And Lifetime Achievement Award goes to Mr. Rajiv Relan. सर के लिए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं मंजिल को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं मंजिल को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए राजीव सर, आप जैसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सो मच राजीव सर। कौन है वो उभरता सितारा, कौन है वो चमकता सितारा ट्रैक्टर इंडस्ट्री का? This award goes to Mahindra Tractors. So I'd like to invite Prime Tractors, Gurpreet Singh, Tractor Fans, Ravindra Singh, तिवारी जी की लाइफ से तिवारी जी, माई किसान दोस्त से वीरेंद्र जाट, मास्टर आशीष सुनील, and then Indian Farmer से आकाश and संतोष. Please come on the stage. A small token of appreciation on the behalf of Tractor Junction and CA Specialty. Our institutional partner, FADA. I request FADA team to please be here on the stage for the felicitation. Is FADA team members here? Are you here? No, they are not here. Media partner, Krishi Jagran. Mamta ma'am is here. Dominic sir is here from Krishi Jagran. I request both of them to please be here on the stage and receive our felicitation and token of love.
Rajat sir is already here. I request Animesh sir to please also join us for felicitating our wonderful jury members. So I request now Rajat sir to please felicitate our jury members here for joining us this evening and being the wonderful jury for the Indian Tractor of the Year Awards 2024 5th edition. First, I would like to extend my warm welcome and thanks to C.R. Mehta ji, Ashish Bharadwaj ji, Hemant Joshi ji. Members. Well, now, ladies and gentlemen, as this event comes to close, what we have left now? What we are left with? Anybody can answer me, please. The biggest award for the year. जी हाँ, दिल की धड़कनें अगर बढ़ रही हो, दिल अगर हथेली पे धड़कता हुआ महसूस हो रहा हो, तो समझ जाइए आप इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में बैठे हैं. And I guess ये one of the most important award है, and मैं देख रही हूँ जोश कहीं गुम सा हो गया है. एक बार जोरदार तालियां बताइए, जोश कैसे नहीं है? जी हाँ, जोरदार और जोरदार, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट होने वाला है उस अवार्ड के बारे में जिसके लिए हम इतनी देर से दिल थाम के बैठे हैं, इतनी देर से यहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस अवार्ड का. And the award is, of course, the Tractor of the Year. This award refers to that model of tractor which has made an impact on the Indian tractor customer, both in terms of innovation in features, retention of brand, image, and volume of sales in last year, thereby helping the company in retaining its market position in the industry. And that is one of the most important awards. हर साल ये award. जी हाँ, हर साल इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और हर साल हम किसी एक ट्रैक्टर को चुनते हैं. हम नहीं चुनते बल्कि किसान चुनते हैं, हमारे जूरी मेंबर्स चुनते हैं. जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार फिर आपको बता दें कि 40% इसमें किसानों के वोट होते हैं. किसान अपने आप वोटिंग करते हैं, चुनते हैं, अपने हिसाब से उसे चुनते हैं और उसमें 60% हिस्सा जो होता है वो हमारे जूरी मेंबर्स का होता है. इन लोगों के द्वारा जिस ट्रैक्टर को सबसे ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं वो ट्रैक्टर चुना जाता है इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से. तो इस बार किसे मिलने जा रहा है ये अवार्ड, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? आपको क्या लगता है कौन है हकदार इस अवार्ड का फॉर इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर? राजीव सर कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? स्वराज. ऑडियंस पोल हो रहा है ये. ऑडियंस पोल ले लेते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, कौन बनेगा इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर? यहाँ ममता जी ये एक साथ 6 वोट दे दिए आपने, वेरी गुड. आप अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, अपने पर इतना भरोसा रखिए. धक 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 धक, बोलिए. जी हाँ, कोई और नाम केवल महिंद्रा और स्वराज? क्या बात है, स्वराज 855. और कोई? घी देसी, मैसी भी देसी. ओके, सो अब इससे पर्दा उठाने का वक्त आ गया है. एंड लेट मी कॉल ऑल माय जूरी मेंबर्स वन मोर टाइम ऑन द स्टेज फॉर द मोस्ट एंटिसिपेटेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट अवेटेड. लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड्स बाय ट्रैक्टर जंक्शन एंड सीएच स्पेशलिटी. एंड लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन दिस. आई एम वेरी मच एक्साइटेड. जी हाँ, लेकिन नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशंस हम आपको दिखाएं उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, वो तभी हम करेंगे जब आप हर नॉमिनेशन पर ताली बजाएंगे, क्योंकि यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है. यहां तक जो भी पहुंचा है असल में वो विनर है. यहां तक पहुंचना एक बड़ी बात है और वो किस तरह से पहुंचते हैं, कितनी मेहनत लगती है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जुटे हुए लोगों को पता है. तो एक बार तालियां अभी से शुरू की जाए. सबसे पहले हमारे जूरी मेंबर्स को हम इनवाइट करते हैं, जिन लोगों की कड़ी मेहनत से आज हम यहां तक पहुंचे हैं, इस जगह तक पहुंचे हैं. And let's see the nominations. The nominees are for the most important, the Tractor of the Year. And the nominees are for the highly anticipated award category. SEAT Speciality presents Indian Tractor of the Year Awards 2024. Introducing the Indian
Tractor of the Year, and the nominees are Mahindra Oja. So that's all for Mahindra Oja. 36 New Holland. EX Special Edition. Sonalika Tiger. CRDS 4-wheel drive. Massey Ferguson. 4x4. Dynatrack 4-wheel drive. Farm Track 60. Come on everyone. तालियां बजनी चाहिए. Swaraj, come on everyone. Eicher Prima. Eicher Prima. 1 Super Plus 12+3 Sugarcane Special. Ace Chetak. Come on everyone. 65. Kartar Globe Track 5936. All eyes on the prize. Let's see who is our winner. All eyes on the prize. I must say it takes a lot of determination, strategies, ideas, and what not. We all wear different hats, but this is time to call upon that one winner who have actually stood in the market. कौन होगा विजेता? धीरे क्यों बोल रहे हैं? आवाज में दम निकालिए बिल. आइशर, फार्म ट्रैक, न्यू हॉलैंड, स्वराज, मैसी. जी हाँ. सो जूरी आइए अब इस पे से पर्दा हटाते हैं और अपनी दिल की धड़कनों को बुलाते हैं, क्योंकि अब अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियों को नहीं बांधिए, क्योंकि आपको उठ के शायद अवार्ड लेने आना पड़े. सो लेट्स सी हु इज द विनर एंड लेट्स सी who get this time the tractor of the year 2024. धक धक फिर से एक बार. सर बोलेंगे. स्वराज 855. एक बार जोरदार तालियां. Swaraj Tractors in the lead. Congratulations. सभी लोग खड़े होकर एक बार तालियां बजाइए. Let's just come on everyone. Let's appreciate each other. 2024 के विजेता घोषित कर दिए गए हैं. 855. Congratulations and celebrations. All right, is everybody ready? Can you pause the music? राजीव सर ने पहले ही ये बात बोल दी थी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में. उन्होंने पहले ही बोल दिया स्वराज. So everyone, ladies and gentlemen, this time it goes to Swaraj. Next time maybe we have a different winner. So be ready for the next year, the 6th edition of ITOT Awards. We will now invite you for the next year. आज से ही हम आपको invite कर रहे हैं for the next year. Let's just be ready. अपने अपने कमर कस लीजिए. And now it's time for the thank you note. I request our jury chairman, C.R. Mehta sir, to please deliver. Vote of thanks. Yes, sir. So I was like, what is she saying? So now we have reached at the 5th edition of Indian Tractor of the Year Award. On behalf of jury members as well as on behalf of Tractor Junction, I thank particularly specialty sponsor of this event, C8 Limited, other sponsors, FADA, Crisil, Krishi Jagran, and all the invitees, those who are participated in this event, as well as congratulate to all the awards winners, particularly under different categories for tractors, implements, as well as financiers, and all the representatives from different companies, those who have participated in this event. I thank all of you and wish you all the best for your profession as well as your industry. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks are also to both the anchors for nicely comparing this event.
Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable feedback. And particularly, I should thank Rajat Gupta and his colleagues from Tractor Junction, those who are organizing this event continuously. And this is the 5th time, and wish all the best for the growth of that company, that this company is growing with leaps and bounds, and it will continue to grow like that. Thank you. Sir, we just want to stop you for a little while. So there were 2 categories जिसके awards लेने के लिए उस time Kubota was not here. So best tractor between 21 to 30 horsepower goes to Kubota Group. I request Kubota to please be here on the stage to receive the award, as they were not here earlier. So I request them to please be here. Gentlemen, as the curtains draw to close, Okay, sir, thank you. I extend, Thank you, sir. well, first of all, let me just take my name. I, Anchor Rimjim Dubey, extend my vote of thanks to each one of you for taking out time from a busy schedule and making it to the grand event of ITOT Awards organized by Tractor Junction in association with CH Specialty. Well, ladies and gentlemen, we are almost ready for the next year. Next year, we are coming up with the 6th edition, and let me tell you, we are going to bang this time. And I request everyone to please be ready for the next award, for the next edition. थैंक यू वेरी मच। और सबसे जाते जाते मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन किसानों को जिनके कारण आज हम सब लोग यहीं पर हैं। उनके लिए 2 लाइन सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ना धूप जलाती दिन की उसे, ना काली रात सताती है। ना धूप जलाती दिन की उसे, ना काली रात सताती है। डटा रहे वो खेतों में जब तक ना फसल पक जाती है। थैंक यू किसान, तुझे 100 सलाम। और 100 सलाम आप सभी लोगों को। अगले साल फिर मिलेंगे यहीं पर किसी नए विजेता के साथ, कुछ नए नॉमिनीज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।